हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्ट किए गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल also we will going to discuss regarding these articles that are related to the rights of children in this lecture. So let's begin. As we know, children, the joy of humankind, the gifts of God, need to be treated with utmost care, love, affection to enjoy their rights as human beings. UDHR आर्टिकल 25(2) में कहा जाता है कि स्पेशल केयर एंड असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एज अ मैटर ऑफ राइट है। कॉन्क्रीट शेप दिया चिल्ड्रन राइट्स को बाय द प्रोविजन ऑफ द UDHR. General Assembly on November 20, 1959 issued the Declaration of the Rights of the Child. Declaration of the Rights of the Child पहले निकाला गया, Convention on the Rights of the Child after this adopt किया गया. We will discuss in this slides only. जो following conventions have been adopted for the rights and welfare of the child are as follows: the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. इसके दो आर्टिकल्स 23 एंड 24 और इंटरनेशनल कोवेनेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ 1966 अंडर आर्टिकल 10 बोलता है कि ये प्रोवाइडेड द केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी शुड गेट एंड द चिल्ड्रन शुड गेट अ फैमिली एनवायरनमेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्रिंसिपल्स कंटेन किए गए डिफरेंट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट एंड कोवेनेंट्स की ये मैंडेटरी किया जाए स्टेट्स में, एंड द चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड देयर राइट्स ऑफ लाइफ टू बी गिवन टू देम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड टू बी ग्रांटेड टू द चिल्ड्रन. The Convention on the Rights of the Child was adopted on November 20, 1989. Remember this कि अडॉप्ट किया गया था 1989 में, बट फोर्स जो हुआ था that is mean कि जब एक्शन में आया था Convention on the Rights of the Child, that was in September 2, 1990. So इस कन्वेंशन में 3 पार्ट्स हैं which contain 54 articles and that talks all about the children's development, protection, promotion. And the child has been defined by the convention as child means every human being below the age of 18 years under the law applicable to the child majority is attained earlier. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में सारे राइट्स रिलेटेड टू चाइल्ड बताए गए, उनका रिकॉग्निशन, उनका प्रोटेक्शन, उनकी एजुकेशन, फूड, शेल्टर, राइट टू नेम, ऑल दोज 54 आर्टिकल्स ऑल ऑन द चाइल्ड एंड देयर लाइफ. Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child अडॉप्ट किया गया 25 मई में 2000 में, जो प्रोक्लेम करता है कि आर्टिकल 77 प्रोवाइड्स करता है कि चिल्ड्रन जो 15 इयर्स के अंदर, मतलब 15 इयर्स से कम एज में है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आर्म कॉन्फ्लिक्ट में. दे शुड नॉट बी रिक्रूट चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 15 इयर्स फॉर वॉर पर्पसेस. तो इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल में प्रॉपरली अटेंशन ड्रॉ आउट किया गया कि जो छोटे छोटे बच्चों को भी वॉर पर्पस के लिए रिक्रूट करा जा रहा था, उनको स्टॉप किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए. अगेन एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल निकाला गया ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड दैट वाज अडॉप्टेड ऑन May 25, 2000, जो 2002 फरवरी में फोर्स मतलब इनटू एन एक्शन आया एंड दैट प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग टारगेटेड इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स. इस प्रोटोकॉल में इंश्योर किया गया कि जो भी चाइल्ड, जो भी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years है shall be compulsorily recruited into regular armed forces and imposes a binding on state for voluntary recruitment. In short, that the person below the age of 18 years not be recruited in the armed forces. Optional protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography has came into force from Jan 18, 2002.
और अक्टूबर 1, 2004 इस प्रोटोकॉल में एक कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के लिए सप्लीमेंट हुआ कि जो वायलेशन हो रहा है चिल्ड्रन के टूवर्ड्स एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ऑप्शनल प्रोटोकॉल कि वो उनको ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय द स्टेट्स से रोका जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए, चाइल्ड वायलेशन ना हो, चिल्ड्रन का मिसयूज ना हो, सेल ऑफ चिल्ड्रन खत्म हो, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाया जा सके बच्चे को. इट सेट्स स्टैंडर्ड अंडर द डोमेस्टिक लॉ अबाउट द वायलेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड द रेमेडियल मेजर कवरिंग द ऑफेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड द रेमेडी एंड देयर नॉन ऑकरेंस. Eradication of child labor. As we all know कि child labor कितना स्टार्ट हो चुका था, और पहले टाइम में इतना स्लेवरी था हर घर में, हर शॉप में, एज वी यूज टू सी कि चाइल्ड लेबर का प्रैक्टिस किया जा रहा है. And the problem of child labor is not only social but economic also, because child labor is resorted by those who are very poor, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो कुछ कमाएं, कुछ अपने सस्टेनेंस के लिए इतना वर्क कर लें कि दे आर एबल टू हैव समथिंग, but it is an social evil and violates the dignity of human beings. Steps taken by ILO regarding the child rights. चिल्ड्रन राइट्स के लिए और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए ILO का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. और इट प्लेड अ ह्यूमन्स जॉब, मतलब बहुत अच्छी ह्यूमन्स जॉब, मतलब वेरी गुड जॉब दे हैव डन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सिंस इट्स इंसेप्शन, एंड हैज अडॉप्टेड 12 मेजर कन्वेंशन जिसमें प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का, और सेटिंग सम कंडीशन की गई कि कौन सी एज तक बच्चों को नहीं करना काम, परमिट नहीं होना उनका वर्क, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, एंड दे आर नॉट बी वायलेटेड बाय एनी अदर वेज. So these are the steps taken by ILO in order to protect and prevent the rights of children. ILO took a very drastic step by adopting a convention named Worst Form of Child Labor Convention. ये सारे जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, ये नेट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए इन सवालों को. आप इनको एज अ जनरल नॉलेज यू कैन हैव दीज पॉइंट इन योर माइंड टू कीप इट इन एज अ जीके क्वेश्चन. कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था जून 17, 1990 एट जेनेवा ILO कन्वेंशन नंबर 182. इस कन्वेंशन को फोर्स करने में 2000 that came into force in 19 November 2000. इस कन्वेंशन में अप्लाई किया जाता है जो बच्चे एज ऑफ 18 से नीचे हैं, they are prohibit and eliminate the worst form of child labor as an urgent matter. The convention prohibits slavery of children or practices similar to slavery, including sale and trafficking of children. In short, worst form of child labor convention में ये प्रोक्लेम किया गया कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा, चाइल्ड सेल नहीं होगा, ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन नहीं होगा, चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा, and this helps in the giving the ensuring the gainful education and vocational training for them. 1992 जनरल असेंबली में अडॉप्टेड किए गए कुछ रेजोल्यूशन और अर्ज किया गया स्टेट गवर्नमेंट से कि ह्यूमन राइट कमीशन को कि नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है स्ट्रीट चिल्ड्रन को, और हु आर बीइंग यूज्ड टू कमिट और असिस्ट इन कमिटिंग ऑफ द सीरियस क्राइम, ड्रग अब्यूज एंड इन स्मगलिंग एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, उसको स्टॉप किया जा सके. And the Commission on Human Rights also printed a special report on child prostitution. हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कब डेवलप हुआ और उसके क्या फंक्शन है. इन दी नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स शॉर्ट नोट ऑफ रिगार्डिंग दिस. तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने और सारे कन्वेंशन ने मेजर्स प्रॉपरली निकाले जिससे कि वो इंटरनेशनली एंड पीपल हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ यूज ऑफ चाइल्ड लेबर को बॉयकॉट कर सकें. तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन और आर्टिकल्स को निकाला गया जिसकी वजह से चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन किया जा सके. एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A जो एडिट किया गया बाय 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 में, जिसमें ये कहा जाता है कि 6 to 14 years of age making responsible that Article 23 of Indian Constitution prohibits beggar and 24 provides prohibition of employment of children in hazardous occupation.
From independence until now, Government of India and the states adopted a number of schemes for the promotion and welfare of children. It has established a number of milestones nationally and internationally to discharge its constitutional and international obligations in promoting the best interest of children. These are the convention's articles which related to the children and their welfare, and in order to protect the survival and development of the children. Health services and standard of living, the plan action provide for protection of children has been also get encouraged child exploitation, poverty and other cause of hunger and dirty living conditions. Though the progress is slow, these efforts have been successfully in catching the attention of the people across the globe, and it is hoped that in near future the next generation father will get proper attention in their education, healthcare and living standard. This was all about the rights of the children in international and in domestic laws. Thank you so much for watching this video.